वेलकम टू द चैनल। आज हमारा सब्जेक्ट एक यूनिक किस्म का है और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन एंड यूएस प्रॉब्लम। इस तरीके के हम इस टॉपिक पे फॉर्मल डिस्कशन की तरफ आएं, आपसे गुजारिश है कि अगर ये चैनल आपके लिए मुफीद मालूमात टेक्नोलॉजी के एरिया में, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट, painting and plating, and especially the topics on automobile, motorcycle, and scooter industry, and operations management, or and many more, is providing you good information. And and if you consider it appropriate, please do like, share, and subscribe this channel. Rare earth elements versus critical minerals. The term rare earth elements and the critical minerals are related to each other, but both are not the same. While we discuss these critical minerals, let us clarify both and understanding, including the point why the United States and other countries need them. Now, are rare earth elements and critical minerals the same? No, they are not. There is an overlap. Critical minerals is a bigger group of the minerals that are vital to the economy, essential for national security, and have supply chain risk. They include lithium, cobalt, graphite, rare earths, and nickel, etc., etc. It is a broader category. Whereas rare earth elements, they are subset of critical minerals and are 17 chemically similar elements consisting of 15 lanthanides plus two other items, that is scandium, scandium and yttrium, mostly used in advanced electronics and magnets. These are subset of critical minerals. Here is the periodic table in which all elements are listed. In this table, in this periodic table, rare earth elements are highlighted. These are 15 items are the group which is known as lanthanides, that is these 15 items, plus these two items, that is scandium and yttrium, that total making it 17 items. These are called rare earth elements. The highlighted yellow color items are light rare earth elements, and the red color highlighted items are heavy rare earth elements. Rare elements are, as stated before, group of 17 elements including the lanthanides, whereas critical minerals, they are those which are vital to the economy and national security. Rare earth elements are part of critical minerals or subset of critical minerals. Rare earth elements like these three and critical items like lithium, cobalt, and nickel, and the supply sources are highlighted on this map. As you can see this color, China is the main source of these
critical minerals, whereas Africa, South Africa, and Australia are two other prominent suppliers of critical minerals. Why does US need critical minerals and rare earths, including rare earth? The reasons are A. Defense and national security. That is, these are used in fighter jets, missiles, satellites, night vision devices, and communication systems. Example, neodymium and samarium in missile guidance and radar. Number two reason, clean energy and green technology. The items are crucial for EV batteries, wind turbines, and solar panels. For example, lithium, cobalt, nickel, and rare earth magnets power electric motors and batteries. The third important reason is electronics and high-tech manufacturing requirements. That is, these elements are required for smartphones, computer chips, fiber optics, LED screens depend on critical minerals. Gallium, tantalum, and rare earths are irreplaceable in semiconductors. This is very, very important reason. Fourth reason, reducing foreign dependency. As we will see in this presentation, China controls over most of the rare earth supply and refining. About more than 40%, about 41% of the global earth supply and refining is done exclusively by China. US sees strategic vulnerability in relying on a single foreign source. US strategic actions. As far as US itself is concerned, it has declared 50 plus elements as critical minerals by its US Geological Survey. Number two, funding is increased for domestic mining and processing facilities and recycling. US strategic action focus on strengthening supply chains with allies, that is Canada and Australia. Although we see the relationship with Canada are strained nowadays. Summary, rare earth elements are specific set of critical minerals. US needs them for defense, clean energy, and technology. Therefore, ensuring access is strategic, economic, and geopolitical priority of United States. Supply security is the key issue for US. Let us examine in detail list of rare earth elements. Here is a comprehensive list of both rare earth elements and critical minerals as recognized by US Geological Survey and global standard as of 2023. Light rare elements are lanthanide and so on this to samarium, whereas heavy rare elements are europium up to lutetium. Also include, though not lanthanide, scandium and yttrium, which are which we have already identified in the periodic table. This
These 15 items, they are lanthanides, whereas these two items, they are not lanthanides, but they are considered as rare earth elements. If we talk in details, lanthanides are series of 15 metallic chemical elements in the periodic table, generally from lanthanum, that is La atomic number 57, to lutetium, that is Lu atomic number 71. They appear in the first row of the F block, usually shown separately at the bottom of the periodic table. Lanthanides are the core rare earth technology because they have specified magnetic, optical, and electronic properties. They are widely used in electric vehicle motors, wind turbines, mobile phones and laptops, aircraft and defense systems, catalytic converters, laser and fiber optics, MRI, and medical equipment. Coming to the bigger group of critical minerals, of which rare earth elements is the subset. List of critical minerals. Critical minerals is a broader category which includes 17 rare earth elements, starting from aluminum bauxite, antimony, arsenic, barite, bismuth, chromium, cobalt, gallium, so on and so forth, helium, lithium, magnesium, nickel, potash, silicon, strontium, tantalum, tin, titanium, tungsten, vanadium, and so on and so forth through their economium. All these all these minerals can be categorized as follows. These critical minerals can be classified in three broader categories, that is, energy related minerals, technology defense related critical minerals, and finally, high supply risk critical minerals. The number one category is energy related critical minerals. These are vital for renewable energy, EVs, nuclear and battery storage. मिसाल के तौर पर lithium is used for EV batteries, grid storage. Cobalt काम आता है lithium and ion batteries. Nickel battery cathodes. Graphite battery anodes और इसकी इम्पोर्टेंस है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में. क्रिटिकल मिनरल्स में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो इसका सब ग्रुप है वो भी इसमें शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे होता है, जैसा कि चंद एक की मिसाल ये है विंड टर्बाइंस, मैग्नेट्स एंड ईवी मोटर्स. The other energy related critical minerals are uranium, nuclear power plants, very obvious, vanadium, redox flow batteries, manganese, battery precursor chemicals, tin, solar PV soliders, electronics, and silicon, very important for solar panels and semiconductors. Here, two important items need to be explained, that is redox flow batteries. That is, they are special type of rechargeable batteries in which the energy is stored in liquid electrolytes kept in separate external tanks rather than inside solid
electrodes like ordinary batteries. Redox flow batteries need vanadium as a which is a critical mineral. And battery precursor chemical are the intermediate chemical compound used to make the final active material inside a battery, especially the cathode, that is positive electrode, and sometimes the anode, that is the negative electrode. So manganese is used in this important item. Other energy related items are tellurium, that is for the thin film solar panel, zirconium, it is required in nuclear reactor cladding and dental treatment also. Beryllium, that is a nuclear and aerospace application. Many minerals appear in more than one category, which is noted where applicable. The second category is of the critical minerals is for the technical, that is, or defense related critical minerals, which are used in missiles, satellites, semiconductors, aerospace, and military technology. It includes all those 17 rare earth elements which are used in guidance systems, radars, lasers, and stealth technology. Here you can imagine the importance of rare earth elements. Gallium, it is used for semiconductors, radars, and LEDs. Germanium, it is used for infrared optics and fire optics. Tantalum, it is used for military grade capacitors. Titanium, aircraft frames and armor. The other technology and defense related critical minerals are niobium, that is used for jet engine and superconductors, hafnium for nuclear control rods and aerospace, bismuth for ammunition, and it is also a substitute for lead, and platinum group metal, that is PGM, they are used as catalysts for electronics and fuel cells. Beryllium is used for aerospace, alloys, and satellites. The other items which are related to technology and defense related critical minerals, they are antimony, it is flame retardant, armor used for armor piercing rounds, arsenic used for semiconductors doping, indium touchscreen thin film technology, सिलिकॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसका इस्तेमाल है चिप्स एंड प्रोसेसर दैट इज सेमी कंडक्टर एल्यूमिनियम जिसका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है इट इज़ यूज फॉर एयरक्राफ्ट एंड डिफेंस स्ट्रक्चर्स The other two items left over are chromium, corrosion resistance alloys, जो सब लोग जानते हैं स्टेनलेस स्टील के बनाने का बड़ा ही अहम एलिमेंट है और फिर जर्कोनियम न्यूक्लियर एंड मिसाइल शील्डिंग और इसका इस्तेमाल डेंटल टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है नाउ कमिंग टू हाई सप्लाई रिस्क इंपोर्ट डिपेंडेंट मिनरल्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एनालिसिस किया गया है कि दुनिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से कौन से ममालिक सबसे ज्यादा ये रिसोर्सेज रखते हैं सबसे पहले रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसका 60 से 80% processing is dominated by China. दूसरा
क्रिटिकल मिनरल क्या है? गैलियम, ये भी चाइना से ही आता है, जो कि सेमी कंडक्टर में इस्तेमाल होता है। जर्मेनियम, एक्सक्लूसिव सप्लायर इसका चाइना है, जो कि हाई टेक ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होता है। ग्रेफाइट, चाइना इज वंस अगेन the biggest ever supplier. Almost no, US has almost no domestic production. So that US has to completely depend on China supply. कोबाल्ट, कोबाल्ट ऐसा आइटम है जो चाइना में रिफाइनिंग की जाती है, एक और इसका 70% ऑफ द माइनिंग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। और आप समझते हैं कि जहां भी मिनरल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स पर्टिकुलरली, वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में क्यों बदल जाते हैं। एंटीमनी, इसका एक्सक्लूसिव सप्लायर चाइना है, जो कि फ्लेम रिटार्डेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। मैंगनीज, इट इज सप्लाइड बाय provided by South Africa and Australia. It is used for battery, cursor, and US has absolutely no mining. Fluorspars, it is produced in two countries, Mexico and China. China is again supplier of these elements. It is used for industrial acid and refrigerators. Chromium, chromium स्पेशली निकलता है और सप्लाई किया जाता है साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान से। यूएस में इसमें कोई मायने नहीं है। वेनेडियम, ये ऐसा आइटम है जो 3 मुख्तलिफ मुल्क सप्लाई करते हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। वेनेडियम भी स्टीरलाइज और बैटरीज में इस्तेमाल होता है। नंबर 10, टिन। टिन सप्लाई होता है इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड म्यांमार। सब जानते हैं कि सोल्डरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टिन इस्तेमाल होता है। सेजियम एंड रुबिडियम, दिस इज अगेन China exclusive supply, and it is a strategic technical element. Niobium, ये ब्राजील इसका मेन सप्लायर है और एक्सक्लूसिव सप्लायर है, जो जेट टर्बाइंस और डिफेंस में इस्तेमाल होता है। विस्मुथ, ये चाइना इसका एक्सक्लूसिव और बड़ा सप्लायर है, ये लेड सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम आता है। पेराइट, इसमें भी चाइना पार्टनर है इंडिया के साथ, ये इस्तेमाल होता है ऑयल गैस ड्रिलिंग पार्ट के लिए। The 16th item, पेंडुलम, ये सप्लाई होता है फ्रॉम रवांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से। इट इज यूज्ड फॉर हाई टेक डिवाइसेस। लास्टली, प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स, ये इसकी सप्लाई है साउथ अफ्रीका और रशिया से, और इसका इस्तेमाल है कैटलिस्ट और डिफेंस सिस्टम में। तमाम सूरत हाल को अगर हम समराइज करें तो पता चलता है कि 7 आइटम्स ऐसे हैं जिसका चाइना एक्सक्लूसिव सप्लायर है, जिसमें शामिल हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये तमाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग इट्स डोमिनेटेड बाय चाइना। चाइना 60 से 80% रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया को सप्लाई करता है। गैलियम, ये भी इसका भी चाइना एक्सक्लूसिव सप्लायर है, जो सेमी कंडक्टर वगैरह में इस्तेमाल होता है। जर्मेनियम, ये भी हाई टेक ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होता है और ये भी चाइना का एक्सक्लूसिव आइटम है। ग्रेफाइट, इसमें भी चाइना का कोई कंपेटिटर नहीं है और यूएस में तकरीबन कोई माइनिंग नहीं होती। एंटीमनी, ये एज ए फ्लेम रिटार्डेंट इस्तेमाल होता है। एंड सेजियम एंड रुबिडियम एटसेट्रा, जिसका इस्तेमाल स्ट्रैटेजिक टेक्निकल है। बिस्मुथ,
ये लेग का सब्स्टिट्यूट है। ये 7 आइटम जो हैं जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट शामिल हैं, ये क्रिटिकल मिनरल्स का वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ चाइना की मोनोपोली है। तो इसमें क्रिटिकल एलिमेंट्स का 60 से 80% चाइना सप्लाई करता है। अब आइए, ये 3 आइटम्स हैं, जैसा कि पेराइट, फ्लोरस्पार एंड कोबाल्ट। ये 3 आइटम ऐसा है जिसके 2 मुल्क सप्लाई करते हैं, यानी ये टोटल क्रिटिकल मिनरल्स का 18% है। और ये 3 आइटम 2 मुख्तलिफ ममालिक हर आइटम में सप्लाई करते हैं, और चाइना उसमें से एक है। जैसा कि बेराइट चाइना और इंडिया से आता है, ऑयल और गैस की ड्रिलिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। और फ्लोरस्पार, इसके भी 2 सप्लायर हैं दुनिया में, और पर्टिकुलरली चाइना और मेक्सिको है, यहाँ भी चाइना का किरदार है। और कोबाल्ट, यहाँ भी आल्दो 70% कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से है, और बाकी का 30% तकरीबन चाइना रिफाइन करता है। यानी ये 3 आइटम ऐसे हैं जिसके 2, हर आइटम के 2 मुल्क सप्लायर्स हैं, उसमें चाइना यहाँ भी खड़ा है। ये अगला वेनेडियम है। ये एक काइंड ऑफ ऐसा है जिसको 3 मुल्क सप्लाई करते हैं, जैसे रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ये स्टील एलाइज और बैटरीज में इस्तेमाल होता है। तो ये भी चाइना में इसका भी बड़ा रोल है। यानी 17 आइटम्स में, 17 क्रिटिकल मिनरल्स में, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स सबका एक सिंगल ग्रुप जो स्पेसिफाइड है, जहां भी 17 एलिमेंट्स हैं, तो इन सब में चाइना का ही रोल है, जिसमें 41% ऑफ द टोटल क्रिटिकल मिनरल जिसका एक्सक्लूसिव सप्लायर चाइना है। और बाकी इन आइटम में भी चाइना सप्लाई करता है दुनिया का। ये बाकी 6 आइटम ऐसे हैं जिसमें चाइना नहीं है। जैसे मैंगानीज है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सप्लाई करता है, विच इज यूज फॉर बैटरी प्रिकर्सर, एंड देयर इज नो यूएस माइनिंग। क्रोमियम, ये साउथ अफ्रीका और कजाकिस्तान, यूएस में कोई इसकी मायने नहीं है। प्लेटिनम ग्रुप मेटल साउथ अफ्रीका और रशिया इस्तेमाल करता है, सप्लाई करता है, और ये इस्तेमाल होता है कैटलिस्ट और डिफेंस सिस्टम में। न्योबियम, ये ब्राजील इसका बड़ा सप्लायर है, जो जेट टर्बाइंस और डिफेंस में इस्तेमाल होते हैं। टिन, इंडोनेशिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एंड म्यांमार is the supplier है, and you know it is used in soldering and electronics. Tantalum, रवांडा एंड कांगो इसके सप्लायर्स हैं, जो कि हाई टेक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है। यानी ये 6 आइटम वो हैं जो टोटल सप्लाई का 35, जो टोटल क्रिटिकल मिनरल्स का 35% आइटम है। ये 6 आइटम जो हैं, ये प्रोमिनेंट सप्लायर इसमें साउथ अफ्रीका और दूसरे मुल्क हैं, और इसमें ये सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें चाइना सप्लायर नहीं है, बाकी इन तमाम में चाइना सप्लायर है। इसी डाटा को इस बार ग्राफ में हम देखते हैं, तो कुछ इस तरह की सूरत हाल बनती है, जिसकी यानी 7 आइटम ऐसे हैं जिसका एक्सक्लूसिव सप्लायर चाइना है, जो कि 41% है। 3 आइटम्स ऐसे हैं जिसमें 2 कंट्रीज सप्लायर्स हैं, जिसमें चाइना शामिल है, 18% सप्लाईज हैं। 1 आइटम 3 कंट्रीज 6%, और सिर्फ 6 आइटम्स हैं जो अदर देन चाइना है, वो 35% ऑफ द आइटम्स हैं, और टोटल 100 है। इससे पता चलता है कि चाइना इज डोमिनेंट and has exclusive rights over this area, that is in 7 items, और यहाँ पे 18%, 6% ये वो आइटम है जिसमें यहाँ भी चाइना का अपना एक रोल है। और ये एक सिर्फ 6 आइटम्स की कैटेगरी है जिसमें चाइना सप्लायर नहीं है। तो उससे पता चलता है कि चाइना के पास क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई की क्या सूरत हाल है, और उसके हद तक वो दुनिया की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर सकता है। डेटा को एक
दूसरे अंदाज में डाउनवर्ड चार्ट की सूरत में देखा जा सकता है कि 41% of the supplies are exclusive China supplies, 18% that is three item two country supplies again और 18% जिसमें चाइना भी अपना रोल रखता है और एक आइटम ऐसा है जिसमें थ्री कंट्रीज हैं और उसमें भी चाइना का अपना एक रोल है और छः या सिक्स आइटम्स विच आर ओनली सप्लाइड बाय अदर कंट्रीज वेयर इन चाइना इज नॉट प्रेजेंट। तो इस तमाम सूरत हाल से पता चलता है कि 65% ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स they are supplied by either exclusively supplied by China or by other countries including China. इस तमाम डाटा के एनालिसिस के बाद पता चला कि 65% आइटम ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स जिसमें 17 आइटम्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसका सप्लाई सोर्स एक्सक्लूसिवली चाइना है या कुछ छोटे बहुत दूसरे ममालिक हैं यानी 65% में 41% एक्सक्लूसिव चाइना मोनोपली है और बाकी की परसेंटेज में उनका दूसरे ममालिक के साथ इश्तराक है, दूसरे ममालिक उसमें सप्लायर जोन्स हैं और सिर्फ 35% ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जिसमें चाइना बिल्कुल चाइना चाइना सप्लायर नहीं है और चाइना के अलावा दूसरे ममालिक हैं। तो इस डाटा से फिर पता चला कि सप्लाई चेन पर्टिकुलरली अमेरिका के लिए कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा इशू है क्योंकि चाइना इज द मेन प्लेयर, चाइना इज द डोमिनेंट प्लेयर और दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स की यही वजूहत हैं कि जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स हैं, एनर्जी रिसोर्स हैं, अदर देन चाइना वो कॉन्फ्लिक्ट जोन भी हैं जैसा कि कांगो वगैरह। तो इसके साथ ही इस एनालिसिस के साथ ही हमारा आज का this we conclude our discussion on the subject of rare earth elements, critical minerals, and supply chain issues, and the concern of United States to maintain and protect its supply lines. Thank you, and thank you very much.